हमारा ये किस चीज के बारे में, सेमिनार्स के बारे में। किसी भी चीज का सेमिनार होता है, मान लीजिए आपका पीटी का सेमिनार है, क्लियर। तो पीटी के सेमिनार में क्या समझा जाता है कि आपको पीटी के बारे में सब कुछ पता है, क्वेश्चन टाइप्स के बारे में पता है, पीटी में कितने मॉड्यूल्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। सेमिनार का मतलब होता है कि वो चीजें आपको क्लियरली सिखाई जा रही है कि कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है, कहाँ कहाँ चीजें करनी है। सो इट मीन्स सेमिनार जो होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो, किसी भी कोर्स के बारे में, पहले से ये एग्जाम्पशन मान ली जाती है कि स्टूडेंट्स को वहां पे, कैंडिडेट्स को वहां पे सब कुछ पता है ऑलरेडी, क्लियर। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कुछ नहीं पता है, तो हाईली इनलाइकली वो कोई ऐसा अकेला ही बच्चा होगा जिसको पूरे ग्रुप में कुछ नहीं पता है, क्योंकि जो सेमिनार होता है वो क्या समझा जाता है कि वो एक प्रोवोक डिस्कशन है, वेरी एक्टिव डिस्कशन है। सो seminars are not designed to be mini lectures. Their educational dash is to provide an opportunity for you to discuss interesting and or difficult aspects of the course. Their educational role is to provide an opportunity. उसका educational role क्या होता है, आपको opportunity provide करे ताकि आप discuss कर पाए interesting और difficult aspects of the course. This is founded on the assumption that, कहते ये इस assumption के ऊपर based होता है, it is only by actively trying to use the knowledge that you have acquired from lectures and texts that you can achieve an adequate understanding of the subject. It means कि assumption क्या होता है कि पहले से ही आपको जो लेक्चर से आपने एक्वायर किया नॉलेज, कि आपको सब कुछ पता है उस कोर्स के बारे में। If you do not understand a point, अगर हमें कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, it is highly unlikely that you will be the only person in the group in that position. पूरे ग्रुप में उस पोजीशन में हम अकेले ही रहेंगे। You will invariably be undertaking a service for the entire group. It means कि उस सर्विस को शायद आप अकेले ही ले रहे हैं। If you come to the seminar equipped with questions on matters which you feel you did not fully understand, आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं उसको समझने के लिए। द सेमिनार इज टू प्रोवोक डिस्कशन। प्रोवोक का मीनिंग क्या होता है, वेरी एक्टिव। टू के बाद क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो आवर फर्स्ट आंसर इज educational role founded on the assumption that highly unlikely undertaking a service to provoke. About 10,000 years ago, people learned how to make cloth. Wool, cotton, flax or hemp was first spun into a thread using a spindle. The thread was then woven into a fabric. कहते हैं उसके बाद थ्रेड को क्या किया गया, फैब्रिक में कन्वर्ट। The earliest weaving machines dash consisted, probably consisted, शायद कंसिस्ट करती थी a little more than a pair of stick. क्लियर, एक पेयर ऑफ स्टिक से कुछ ज्यादा, थोड़ा सा कुछ ज्यादा होता था। That held a set of parallel threads called the wrap, while the cross thread called the waft was inserted later machines. कहते हैं उसके बाद क्या किया गया, वेफ्ट को इंसर्ट किया गया लेटर मशीन्स में, कोल्ड लूम्स, जिनको लूम्स कहा जाता था, हैड रोड्स, जिसके साथ क्या होती थी, रोड्स होती थी, दैट सेपरेटेड द थ्रेड टू अलाउ द वेफ्ट टू बी इंसर्टेड मोर इजीली। यहाँ पे क्या है, आपकी डिग्री लगी हुई है, मोर इजीली, इंसर्टेड मोर इजीली। अ पीस ऑफ वुड कॉल्ड द शटल holding a spool of thread was passed between the separated threads. The basic dash, the basic principles. Principles क्यों यूज हुआ है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स दो मशीनों के लिए, जो स्टार्टिंग में जो आई थी, लेटर मशीन्स जो आई थी, क्लियर। The basic principles of spinning and weaving have stayed the same until the present day, though during the industrial revolution of 18th century many ways were found of dash the processes. Many ways were found of automating the processes. Automatic करने के लिए processes को बहुत सारे तरीके ढूंढे गए। With a new machine such as spinning mold, many threads could be spun at the same time, and with the help of devices like the flying shuttle, broad pieces of cloth could be woven at great speed. So our first answer is machine probably consisted inserted more easily. आपकी रीडिंग का एक रूल होता है कि जैसे कंसिस्टेड, प्रोबेबली कंसिस्टेड मीन्स कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एल वाई वाला वर्ड उससे पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, क्लियर। सेम इंसर्टेड यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है, इंसर्टेड मोर इजीली, इंसर्टेड इजीली भी हो सकता है, इंसर्टेड मोर इजीली और ज्यादा इजीली इंसर्ट करना, क्लियर, थ्रेड को।
Then the basic principles automating the processes. Bees need two different kinds of food. Bees need two different kinds of food. Bees को क्या दो तरीके के food चाहिए. One is honey made from nectar, which is actually is a fluid that is collected in the heart of the flower to dash pollination, to encourage pollination by insects and other animals. Secondly, come from pollen. It is fine powdery substance in yellow consisted in microscopic grains dash from the male part of a flower. Microscopic grains discharged from the male part of a flower or from a male cone. It contains a male gamete that can fertilize the female oval, which is dashed by, which is by से पहले verb की third form, which is transferred by wind. Insects or other animals. Let us go with the honeybee from her flower to the hive and see what happens. Most bees gather only pollen or nectar. दो ही तरीके बताए थे, एक nectar के थ्रू और एक pollen. As she sucks nectar from the flower, it is dashed in her special honey, stored or stayed. Stored. It is stored in her special honey stomach, ready to be transferred to the honey making bees in the live. So our first answer is to encourage. To encourage. To के बाद verb की first form. Grains discharged, which is transferred by. By से पहले verb की third form. It is stored in her special honey stomach. डिक्टेटरशिप इज नॉट अ मॉडर्न कंसेप्ट. डिक्टेटरशिप क्या होता है? तानाशाही. क्लियर? वो एक मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है. पहले टाइम में जब राजा महाराजा होते थे तो उस टाइम भी क्या होता था, जो मान लीजिए कोई भी राजा है, किसी भी वजह से इमरजेंसी के केस में किसी को भी अपनी पावर जब किसी को दे देते थे तो वो लोग भी क्या करते थे, उस चीज को अपना समझ लेते थे. तो आज भी वही चीज है. Dictatorship is not a modern concept. 2000 years ago, during the period of the Roman Republic, exceptional powers were sometimes given by the Senate to dash dictators, to individual dictators, such as name दिए हुए Sulla and Julius Caesar. The dash was that, the intention was that, intention क्या होती थी, the dictatorship would be temporary and that it would make it possible to take swift and effective action to deal with an emergency. There is some disagreement as to how the term should be applied today. Should be used in the original form to describe the temporary exercise or emergency powers, or it can now be applied in a much broad sense as common usage suggests. So our first answer is two individual dictators. The intention was that some disagreement should be applied today. Next, music was an important to the ancient Egyptians as it is our modern society. जो म्यूजिक है वो एंशिएंट इजिप्शियंस में भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि आज हमारी मॉडर्न सोसाइटी में है. Although it is thought that music played a dash throughout the history of Egypt. Music played a role throughout the history of Egypt. Those that dash the Egyptian writings को क्या करते हैं? Study. Those that study the Egyptian writings have discovered that music dashed to become more important. Music seemed to become more important in what is called the pharaonic period of their history. This was the time. Period की बात कही है, so it means this was the time when Egyptian dynasties of the pharaohs were established and music was found in many parts of everyday Egyptian life. So our first answer is
Music played a role. Study the Egyptian writings. Music seemed to become pharaonic period. This was the time were established. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.